इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ आई हैं और उनमें से एक रिसेंटली रिलीज़ हुई है जिसको भूल भुलैया 3 के नाम से जाना जा रहा है और उसका आज हमने रिव्यू करना है। और इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे मशहूर शराकतों में जो है इसको जाना जाता है। इसका सबसे पहला अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहला जो है इसका पार्ट 2007 में इसकी पहली किस्त के साथ ये आई थी और प्रियदर्शन की हिदायतकारी में और अक्षय कुमार और विद्या बालन ने अदाकारी की। ये सीरीज़ घर घर में एक नाम बन गई थी। असल भूल भुलैया जो है को इसकी दिलकश कहानी, यादगार परफॉर्मेंस और एक साउंड ट्रैक के लिए जाना जाता है जो अभी भी सामीन के कानों में गूंजता है और बड़ा मशहूर हुआ था। फिल्म के ज़रिए तख्लीक करदा पुरजोश लेकिन तफरीही माहौल ने एक देर पा तासुर छोड़ा जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा में असल सनफ़ के लिए एक आला मयार जो है वो कायम कर दिया था। 2022 में इसका सेकंड सीक्वल आया भूल भुलैया 2 के नाम से और फ्रेंचाइज ने जो है इसको रिलीज़ किया। इसकी फ्रेंचाइज की बड़ी फातिहाना वापसी हुई। इस टाइम ये भी बड़ी कामयाब मूवी रही। अनीस बज़मी की हिदायतकारी में और कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा एडवानी ने जो है इसमें अदाकारी की। सीक्वल ने असल की रूह को ताज़ा तवानाई और मज़ा से मुतासर करते हुए इसे हासिल किया। कार्तिक आर्यन की रूह बाबा की तस्वीर कशी एक निराला और संकी घोस्टबस्टर सीरीज़ में एक नई पावर लेके आया जिसने फ्रेंचाइज के देरीना मदाहों को खुश करते हुए शायकीन की नौजवान नस्ल को जीता। भूल भुलैया 2 न सिर्फ एक तिजारती कामयाबी थी बल्कि एक सकाफती रुझान भी था जिसने ये साबित किया कि फ्रेंचाइज के पास अभी भी बहुत कुछ पेश करने को है। अब बात करते हैं 2024 में बहुत ज़्यादा मुतवक्के तीसरी किस्त भूल भुलैया 3 आखिरकार बड़ी स्क्रीन पर आ गई है। एक बार फिर अनीस बज़मी की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म माफूकुल फितरत, इसरार, नफ्सियाती साजिश और हल्के फुल्के कॉमेडी की दुनिया में गहराई में डूबकर फ्रेंचाइज को नई बुलंदियों तक ले जाती है। ये एक पुरजोश सवारी होने का वादा करता है जिसमें खौफ और मज़ाक के अनासर को इस तरह मिलाया जाता है कि ये सिलसिला ही कर सकता है। फ्रेंचाइज के शायकीन के लिए भूल भुलैया 3 सिर्फ एक फ़िल्म से ज़्यादा ये एक वाक़या है, कहानी सुनाने का जश्न जो नस्लों पर मुहित है। सीक्वल की रिलीज़ के बाद से भूल भुलैया 3 की उम्मीदें बढ़ रही थीं। टीज़र ट्रेलर से लेकर प्रमोशनल मोमो तक जो प्रमोशनल कैंपेन्स होती हैं उन तक जिसमें ये प्रीतवद्दत हवेली की दिलकश झलकियाँ पेश की गई और जिनमें कार्तिक आर्यन ने रूह बाबा के किरदार को दोबारा पेश किया। फिल्म ने एक ऐसी हंगामा आराई की जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। शायकीन ने मानूस किरदारों की वापसी, नए किरदारों के तारुफ और मंजुलिका के बारे में देरीना सवालात के जवाबात के इम्कानात के बारे में कयास आराइयाँ की जो कि फ्रेंचाइज का मुतरादिफ बन चुकी है। पहली फिल्म में नाकाबिल फरामोश मंजुलिका का किरदार अदा करने वाली विद्या बालन को वापस लाने के फैसले ने जोश व खरोश और पुरानी यादों की एक और लेयर बना दी। 1 नवंबर 2024 को ये फिल्म रिलीज़ हुई। त्यौहार के मौसम के साथ मुताबिकत रखने के लिए बिल्कुल ठीक वक्त पर थी जिसकी वजह से यह ख़ानदान के बाहर घूमने फिरने और जश्न मनाने के इंतखाबात थे। जैसे ही सामीन सिनेमा घरों में गए भूल भुलैया 3 ने अपने सनसनी और हंसी और सरप्राइज़ के वादे को पूरा किया। ये सिर्फ फ्रेंचाइज का तसलसल नहीं बल्कि एक अर्तका है जिसमें अनीस बज़मी की एक अपनी जड़ों पर कायम रहते हुए सीरीज़ को जदीद हसासियत के मुताबिक ढालने की सलाहियत का मुजाहिरा पेश किया। इसके मरकज़ में भूल भुलैया 3 रिवायत और जदीदियत, साइंस और तोहम परस्ती, खौफ और हिम्मत के मिलाप की कहानी है। ये पहले की फ़िल्मों में दरियाफ़्त किए गए मौज़ूआत पर बनाया है जैसे कि यकीन की ताकत, गैर हलशुदा सदमे का असर और इंसानी रूह की लचक।
प्रेतवा दत्त हवेली सीरीज में एक बार फिर चलने वाली शक्ल जहन के लिए एक इस्तारा के तौर पर काम करती है। कुशादा पुरस्रार और पोशीदा गोशों से भरा हुआ जहां खौफ और राज छुपे रहते हैं। एक बार दास्तान मंजुलिका की लानत के इर्द गिर्द के अफसानों की गहराई में उतरती है, सामीन को अपनी नशिस्तों के किनारे पर रखते हुए नई बसीरतें पेश करती है। फिल्म को एक शानदार कास्ट से भी फ़ायदा होता है जो कहानी को ज़िंदा करती है। अब कार्तिक आर्यन का रूह बाबा एक मशहूर किरदार बन गया है जो हकीकी कमज़ोरी के लम्हात के साथ कॉमेडी और करिश्मा को मिलाता है। भूल भुलैया 3 में उनकी वापसी ने फ्रेंचाइज के नए चेहरे के तौर पर उनकी जगह को मजबूत किया, जो अक्षय कुमार के नाकाबिल फरामोश डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव के एक नाकाबिल जानशीन हैं। मंजुलिका के तौर पर विद्या बालन का कैमियो पुरानी यादों को जोड़ता है, जो नाजरीन को सीरीज़ की इब्तदा और इसकी पायदार अपील की याद दिलाता है। माधुरी दीक्षित, जो अपनी खूबसूरती और स्क्रीन की मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं, एक अहम किरदार अदा करती है जो कहानी में गहराई का इजाफा करती है, जबकि तृप्ति जो है फिल्म में ताज़ा तवानाई और जज्बात लाती है। तकनीकी नुक्ता नज़र से भूल भुलैया 3 जो है एक बसरी और समई सलूक है। मनु आनंद की सिनेमाग्राफी हवेली की शान और शौकत को अपनी गिरफ्त में लाती है, जिससे एक ऐसी तरतीब पैदा होती है जो दूसरी दुनिया और ज़मीनी दुनिया को महसूस करवाती है। पस मंज़र का स्कोर संदीप शिरोडकर ने तरतीब दिया। ड्रावना अंदाज के दौरान तनाव को बढ़ाता है, जबकि मज़ाहिया लम्हात को चंचल धुनों के साथ पूरा करता है। गाने जिनमें मंजुलिका रिटर्न्स और रूह बाबा तराना के बहुत से चर्चे शामिल हैं, पहले ही चार्ट पर चढ़ चुके हैं, जो फौरी तौर पर हिट हो गए। और अगर हम कास्ट और परफॉर्मेंसेस की बात करें कि किस एक्टर ने किस तरह का रोल, कितना अच्छा रोल प्ले किया, तो according to me, one of the biggest draws of the Bhool Bhulaiyaa franchise has always been its stellar cast, and Bhool Bhulaiyaa 3 continues his tradition with an ensemble lineup of seasoned actor, rising stars, and beloved characters. The casting has been meticulously planned to strike a balance between nostalgia, novelty, and talent, ensuring a dynamic mix of performances that elevates the film's narrative. तो जो कास्ट है ओवरऑल वो बहुत अच्छी थी, सबकी अदाकारी पसंद आई, जितने भी मेन एक्टर्स या को एक्टर्स जो हैं सब ने अच्छी अदाकारी की। एट द हार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कार्तिक आर्यन, जिसने एज अ हीरो रोल प्ले किया, who reprises his role as a Rooh Baba, the eccentric ghostbuster who won audiences over in second installment. जाहिर है जिसने जो देखने वालों का जो है वो उनको काफ़ी मुतासिर किया। Kartik has emerged as one of the Bollywood's most dependable actor, and in Bhool Bhulaiyaa 3 he takes his character to new heights. Rooh Baba is not just a quirky, humorous figure. This time he is also faced with deeper emotional conflicts and challenges that test his wit and resolve. Kartik's performance reflects his growth as an actor, seamlessly blending comedy, suspense, and moments of vulnerability. Whether it's his impeccable timing during the lighter scenes or the intensity he brings to the more dramatic movements, Kartik anchors the films with his charisma and energy. Fans of franchise will be delighted to see his unique take on the role evolve further,
solidifying Rooh Baba as one of the most memorable character in modern Bollywood. तो फैंस जो हैं वो जाहिर है उनको फिर से देखना पसंद करेंगे, और क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है, जो उन्होंने रोल प्ले किया, वो बहुत बढ़िया है इस मूवी में। तो फैंस जाहिर है ये चाहेंगे कि अगर नेक्स्ट जो है इसका कोई पार्ट बनता है, जैसे पार्ट अगर 4 बनाते हैं, तो उसमें भी जो मेन रोल है वो कार्तिक आर्यन का होना चाहिए, क्योंकि इनकी अदाकारी जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद आई है। Adding to the excitement is the return of iconic Vidya Balan as Manjulika, a character that has been synonymous with the franchise legacy, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जो पिछले इसके पार्ट्स थे तब भी फ्रेंचाइज ने मंजुलिका जो है वो एज अ मंजुलिका विद्या बालन को ही हायर किया था, और इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो ये एक बड़ा एक अच्छा एडिशन था कि विद्या बालन को लेके आए। Vidya's brief yet impactful appearance is a master stroke, tapping into the nostalgia of the original 2007 film while adding layers to the ongoing narrative. Her portrayal of Manjulika once again showcases his incredible range as an actor, blending menace and vulnerability in equal measures. Her scenes are among the most talked about moments in the film, serving as a reminder of why the original Bhool Bhulaiyaa remains a classic. तो जाहिर है विद्या बालन जो है एक मंझी हुई अदाकारा हैं और उनका एक नाम है, तो उनके एडिशन ने जो है फिल्म को बहुत मतलब कामयाबी दिलाई है। Vidya's presence not only ties the new film to its roots but also enhances its emotional depth, giving fans a sense of continuity and closure. And another legend who was added in the film, तो वो है माधुरी दीक्षित। Madhuri Dixit, one of the Bollywood's most celebrated stars, joins the cast in a pivotal role that adds gravities to the story. And known for her versatility and timeless charm, Madhuri brings a layer of elegance and emotional resonance to the film. Her character, while shrouded in mystery, plays a crucial role in unraveling the secrets of the haunted haveli. जो कि हवेली मूवी में दिखाई गई है, वो बहुत ही ड्राउनी और ख़तरनाक सी दिखाई गई है। जब मैंने ख़ुद मूवी देखी तो मुझे बहुत वो ड्राउनी लगी और काफ़ी वो डर लगा मुझे। Madhuri's performance is a testament to her enduring appeal and acting prowess, as she effortlessly transitions between moments of warmth, wisdom, and intrigue. Her chemistry with the rest of the cast, particularly Kartik Aaryan, adds a fresh dynamic to the narrative, making her one of the standout elements of the film. The younger generation of talent is represented by Tripti, who delivers a compelling performances as a key figure in the story. Tripti जो है वो मेरी भी बड़ी पसंदीदा है, इनकी अदाकारी बड़ी अच्छी होती है। Tripti, known for her work in critically acclaimed films, proves her mettle once again by holding her own alongside industry veterans. Her character brings an emotional core to the film, serving as a bridge between the supernatural elements and the human drama. At its heart, Tripti's ability to convey vulnerability and determination makes her a perfect fit for the franchise, and her performance is likely to resonate with younger audiences. तो तृप्ति क्योंकि एक यंग जनरेशन से है, तो जाहिर है जो यंगर जनरेशन है, जो नौजवान है, वो उसको पसंद करते हैं, उसकी अदाकारी को पसंद करते हैं, और इसलिए ये भी एक बड़ा बेनिफिशियल एडिशन था मूवी के लिए। द सपोर्टिंग कास्ट आल्सो डिजर्व्स रिकॉग्निशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म्स। तो जो सपोर्टिंग कास्ट होती है, जाहिर है उनका एक
बड़ा इम्पैक्ट होता है। और इस मूवी में जो है वो काफ़ी लोगों ने एक सपोर्टिव रोल प्ले किया, जिनमें जो है राजपाल यादव हैं। राजपाल यादव reprising his role as the ever hilarious Chote Pandit provides much needed comic relief amidst the tension and horror. Rajpal's impeccable comedy timing and natural flair for humor make him a scene stealer in every sequence he's a part of. सो इसका राजपाल यादव का जो इनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही हर दफ़ा एक यूनिक होती है, अच्छी होती है। मुझे एज अ कॉमेडियन जो है वो बहुत पसंद है। मैं अक्सर जो है उनकी कॉमेडी मूवीज़ देखता रहता हूँ। और हिज कैरेक्टर सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द फ्रेंचाइज़ लाइटर साइड, इंश्योरिंग दैट द फिल्म रिमेन्स entertaining even during its darker moment. इसके अलावा veteran actor Presh Rawal also joins the cast in a special role, bringing his trademark wit and gravities to the story. His character adds a layer of intrigue and complexity, further enriching the film's narrative. Presh's ability to command attention with even the simplest of lines makes his performance a memorable one. जाहिर है वो एक दिग्गज अदाकार हैं, बड़े मंझे हुए अदाकार हैं और काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, बड़े सीनियर अदाकार हैं। तो प्रेश रावल का जो एडिशन है फिल्म के अंदर वो भी फिल्म में एक जान डालता है। The ensemble cast is rounded out by a host of talented actors who play smaller yet significant roles. Each character, from the curious villagers to the skeptical family members, is well defined and contributes to the film's immersive atmosphere. The interactions between the characters are laced with humor, suspense, and emotional depth, creating a tapestry of performances that keeps the audience engaged throughout. तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, सारे जो कुल मिला के एक्टर्स हैं, जो को होस्ट हैं, तो एक सस्पेंस और एक थ्रिलर सा बना रहता है। और जो ऑडियंसेस हैं वो उसके साथ, मूवी के साथ बने रहते हैं, वो इंगेज रहते हैं। और बहुत ही एक कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक बढ़िया सी मूवी बनी है। Okay, the next one is अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो from a performance standpoint, one of the film's most striking achievement is how to balance its ensemble cast. Despite the star power of actors like Kartik Aaryan, Vidya Balan and Madhuri Dixit, no single character overshadow the other. तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। Instead, the film allows each character to shine in their respective role, creating a sense of cohesion and collaboration. Okay. अगर केमिस्ट्री की बात की जाए between the cast members is another highlight of the film. Whether it's the playful banter between Kartik and Rajpal, the tension filled between Vidya and Madhuri, or the emotional connections that Tripti character brings to the table, the relationship feels genuine and dynamic. This authenticity in their interactions adds a layer of realism to the supernatural story, making it all the more engaging. तो एक जो connections था एक्टर्स के दरमियान, और इस चीज़ ने जो है स्टोरी को आपस में बाइंड किया और एक बड़ा engaging सा बनाया स्टोरी को। उसके बाद अगर बात की जाए प्लॉट ओवरव्यू की तो वो भी बड़ा बढ़िया नज़र आता है इस मूवी में। The plot of Bhool Bhulaiyaa 3 delves deeper into the eerie, suspenseful, and
comedic world that the franchise is famous for, while introducing fresh twists and expanding on its core methodology. तो इसमें जो है मज़े की बात जो सबसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, एक हॉरर भी है ये मूवी और इसमें कॉमेडी भी इंक्लूड की गई है. आप कॉमेडी भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ी अच्छी कॉमेडी हुई है और ड्रावनी मूवी तो ये है ही है. द फिल्म builds on the legacy of its predecessors, but this time the narrative takes a darker and more introspective turn, weaving together elements of psychological drama, folklore, and humor to create an engaging cinematic experience. अब जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट होती है? द स्टोरी बिगिंस विद रू बाबा, who is Kartik Aaryan, at the peak of his fame as celebrated ghostbuster, जो कि जो घोस्ट होती हैं उनको पकड़ते हैं, काबू में करते हैं, और इस तरह से स्टार्ट होती है स्टोरी. Having dealt with various supernatural entities in the past, he now finds himself struggling with a personal crisis that makes him question his abilities and purpose. This internal conflict adds depth to his character, showcasing a more vulnerable side of Rubaba that wasn't explored in the previous film. His journey becomes the emotional anchor of the story, allowing the audience to connect with him on a deep level. The central conflict arises when Rubaba is called to investigate a mysterious case involving a sprawling centuries-old haveli that is rumored to be haunted by a vengeful spirit. The haveli, with its labyrinthine corridors, hidden rooms, and haunting atmosphere, serves as the perfect setting for the film's mix of horror and intrigue. तो जो हवेली है उसमें उसकी पुरानी बहुत सीधा सी दीवारें हैं और बड़े पुराने डोर्स और रूम्स इस तरह के दिखाए गए हैं जो एक डेप्थ क्रिएट करते हैं उस सीन के अंदर, तो जिससे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पुरानी जगह है. और क्योंकि 200 साल पुरानी हवेली दिखाई गई है तो वो जो सीन्स क्रिएट किए गए हैं वो वाकई में ऐसे लगता है कि ये 200 साल पुरानी हवेली है और यहाँ पे जो है कोई ऐसी घोस्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें रहती हैं. The local believes that the malevolent spirit of Manjulika has returned, bringing with her a curse that threatens to destroy anyone who dares to enter the haveli. This connection to the franchise's most iconic antagonist immediately grabs the audience's attention, setting the stage for a thrilling and nostalgic adventure. As Roo Baba delves deeper into the mystery, he uncovers a series of shocking revelations about the Haveli history and origin of Manjulika curse. The film skillfully integrates elements of Indian folklore and methodology, creating a narrative that feels both grounded and otherworldly. The use of flashbacks to explore the tragic backstory of Manjulika adds layer to the plot, making her more than just a one-dimensional antagonist. These moments are not only visually stunning but also emotionally resonant, giving the audience a glimpse into the pain and injustice that turned Manjulika into a vengeful spirit. तो मंजुलिका का रोल जो है वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और बड़ा पसंद आया. While the horror elements keeps the audience on the edge of their seats, the film also delivers plenty of laughs, staying true to the franchise's signature blend of genres.
Uh, Roo Baba interactions with the quirky villagers and his uh, Roo Baba's connection with the villagers, uh, and his loyal sidekicks, जो कि छोटे पंडित हैं जाहिर है राजपाल यादव, provide much needed comic relief between the tension. The humor is smartly woven into the narrative, ensuring that it never feels out of place or forced. Rajpal Yadav, in particular, shines in his role, delivering some of the film's most memorable one-liners and slapstick moments. तो राजपाल यादव जो हैं वो बाकी में एक बड़े माने हुए अदाकार हैं और एज अ कॉमेडियन जो हैं वो उनका जो रोल होता है वो ऑलवेज बड़ा मेमोरेबल होता है और लोगों को पसंद आता है। और इसके अलावा कुछ न्यू कैरेक्टर्स को भी इस मूवी में ऐड किया गया और जो कि बड़ा स्टोरी में एक जान डालता है। And the introduction of new character adds further intrigue to the story. Tripti plays a young woman with mysterious connection to the haveli, जिसका उस हवेली के साथ कोई ऐसा कनेक्शन है जो उसको मतलब उसको बड़ा हवेली के साथ कनेक्ट रखता है, whose presence becomes pivotal to unrevealing the truth about Manjulika return. Her character brings an emotional core to the film as her journey is intricately tied to the supernatural events unfolding around her. Meanwhile, Madhuri Dixit portrays a wise and enigmatic figure who acts as mentor to Roo Baba, guiding him as he confronts both his personal demons and the malevolent forces within the Haveli. Her character's depth and complexity add a layer of sophistication to the narrative, enriching the overall storytelling. As the film progresses, the stakes grow higher, leading to a gripping and unpredictable climax. The final confrontation between Roo Baba and Spirit of Manjulika is both visually spectacular and emotionally charged, combining high stakes action with moments of genuine pathos. Without revealing too much, it's safe to say that the climax offers a satisfying resolution while leaving enough room for potential future installments. The ऐसा हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में जो है इस मूवी में इतनी एक स्पेस रह गई है, एक इन्होंने ऐसा खला छोड़ा है कि फ्यूचर में नेक्स्ट पार्ट भी इसका बना सकते हैं। एक स्टोरी को इस तरह से रखा गया है कि आने वाले दिनों में इसका एक और सीक्वल भी बनाया जा सके। So as the film progresses, one of the film's standout feature is its stability to balance multiple tones and genres. The narrative seamlessly. One of the film's standout feature is its ability to balance multiple tones and genres. The narrative seamlessly transitions between moments of suspense, humor, and emotional drama, keeping the audience engaged throughout. Pacing is tight, ensuring that there's never a dull moment, while the twists and turns in the plot keep viewers guessing until the very end, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि एक सस्पेंस बना रहता है और जो व्यूअर्स होते हैं वो उस मूवी को एंड तक देखते हैं। कोई भी चीज़ मतलब रिवील नहीं होती
वन बाय वन चीज़ें रिवील होती हैं तो एक बड़ा मज़ा आता है। चीज़ें मतलब वन बाय वन रिवील होती हैं और एंड तक जो है इंसान उसके साथ इंगेज रहता है और वो मूवी पूरी देखता है। द पेसिंग इज टाइट, इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट, while the twists and turns in the plot keep viewers guessing until the very end, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड तक उसको जो है अपनी तरफ से गैस करते रहना और एंड पे चीज़ों का पता चलना, एक सस्पेंस होता है ना, उस तरह की चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है इस मूवी में। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल एंड सुपरनेचुरल थीम्स एड्स अ यूनिक फ्लेवर टू द स्टोरी, मेकिंग इट मोर देन जस्ट अ टिपिकल हॉरर कॉमेडी। सो आखिरकार ये हम कह सकते हैं कि भूल भुलैया इज़ अ फिल्म दैट सेज true to the essence of franchise while pushing its boundaries in exciting new directions. The plot is not just about battling ghosts or solving mysteries. It's also a story about self-discovery, redemption, and the power of belief. With its compelling narrative, richly developed characters, and masterful blend of horror and humor, the film offers an experience that is both entertaining and thought-provoking. ओके तो इसके बाद हम इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो मूवी किस तरह की है। द सक्सेस ऑफ फिल्म लाइक भूल भुलैया 3 relies not only on its engaging plot and stellar performances, but also on its technical brilliance. The film's technical aspects plays a crucial role in creating the immersive experience that keeps audience hooked from start to finish. From cinematography to sound design, every element of the production is meticulously crafted to enhance the film's blend of horror, comedy, and drama. One of the standout technical achievements in the film is its cinematography, handled by Manu Anand. तो सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म के अंदर जो की गई है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है और इसको हम आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। द हॉन्टेड हवेली विद इट्स स्प्रॉलिंग कॉरिडोर्स, हिडन पैसेजवेज एंड grandiose architecture comes alive through his lens. Each frame is carefully composed to evoke a sense of unease and mystery, immersing viewers in the eerie atmosphere of the setting. The use of lighting is particularly noteworthy. Uh, Dimly lit hallways, flickering lamps, and the strategic place of shadows create a foreboding ambience that heightens the horror elements. At the same time, brightly lit scenes during comedic moments provide a stark contrast, emphasizing the duality of film's tone. Manu Anand's work ensures that the Haveli itself becomes a character in the story, a place with its own secrets and personality. और अगर हम साउंड डिज़ाइन की बात करें तो साउंड डिज़ाइन जो है वो इसमें बहुत अच्छे हैं। The sound design is another critical and important component that elevates the film's impact. Horror films often rely heavily on sounds to build tension and deliver scares, and Bhool Bhulaiyaa 3 excels in this area. We can say this. The creaking of old doors, whispers echoing through empty rooms, and sudden loud noises are all expertly used to keep the audience on edge. The subtle use of ambient sounds such as the rustling of leaves and distant howling of wind adds to the immersive quality of the film. The jump scares are amplified by the perfectly timed use of sound effects, creating moments of genuine fright
that linger long after the scene has ended. Complementing the sound design is the background score composed by Sandeep Shirodkar. The score is masterful, a blend of eerie melodies, dramatic orchestral pieces, and playful tunes that reflects the film's shifting tones. The haunting theme uh, associated with Manjulika is particularly effective, evoking a sense and dread every time it plays. One of the other hand, the light-hearted musical cues during Rooh Baba's comedic antics provide much-needed relief, ensuring that the film never becomes too heavy or monotonous. The music works in tandem with the narrative, guiding the audience's emotion and enhancing the overall storytelling. उसके बाद अगर हम बात करें विजुअल इफ़ेक्ट्स की, वीएफएक्स की, तो क्या कमाल के वीएफएक्स यूज़ किए गए हैं इसमें. और वीएफएक्स किसी भी फिल्म को कामयाब बनाने के लिए की एलिमेंट होते हैं. इसके अलावा जो है फिल्म कामयाब नहीं हो सकती. तो इन भूल भुलैया 3 are another area where the film shines is the visual effect. Creating a believable supernatural world is no small feat, and the VFX team rises to the challenge with the impressive results. जिस तरह से घोंसली अपीयरेंसेस दिखाई गई हैं और जिस तरह से उस हवेली को एक पुरानी हवेली बना के दिखाया गया है, जिस तरह उसकी दीवारें और पुराने कमरे दिखाए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी VFX टीम की. The ghostly apparitions, spectral figures, and paranormal phenomena are rendered with a level of detail and realism that is both chilling and captivating. The scene involving Manjulika's spirit is particularly visually stunning, combining traditional horror elements with the modern technology to create an unforgettable experience. The VFX plays a key role in the film's climax, where supernatural and the physical worlds collide in visually particular showdown. And the next one is film's production design that deserves special mention as well. The Haveli, where much of the story takes place, is a masterpiece of set design. Every detail, from the ornate carvings on the wall to the dusty chandeliers hanging from the ceiling, contributes to the authenticity of the setting. The attention to detail is remarkable, creating a space that feels both grand and ominous. The Haveli's design also reflects the cultural and historical context of the story, incorporating elements of the traditional Indian architecture and folklore. This meticulous approach to the production design ensures that the setting feels like an integral part of the narrative rather than just a backdrop. और नेक्स्ट अगर हम बात करें इस मूवी का के कैसे क्रिटिकल व्यू पॉइंट की बात करें, जैसे क्रिटिकल रिसेप्शन की, तो critical reception for Bhool Bhulaiyaa 3 has been a fascinating mix of praise, constructive critique, and debate, reflecting the expectations and diverse tastes of its audience and viewers. As the third installment in a beloved franchise, the film had a high bar to meet, and its reception has highlighted both its strengths and areas where it may have fallen short. On one hand, many critics
have lauded the film for its entertainment value and ability to maintain the franchise's trademark balance of humor and horror. Bollywood Hangama, for instance, was effusive in its praise, noting that the film works due to its performances, tout script, creative execution, and above all, unpredictable climax. The review commended director Anis Bazmi for successful navigating the challenges of crafting a sequel that honors the original while introducing new elements to keep the narrative fresh. The publication also highlighted the performances of Kartik Aaryan and Vidya Balan, whose portrayal of Rooh and Manjulika, respectively, were described as scene-stealing and iconic. Similarly, the Times of India awarded the film 3.5 out of 5 stars, calling it perfect Diwali entertainer for families. The review emphasizes the movie's ability to deliver laughs, scares, and nostalgia in equal measure, making it an ideal choice for the festive season. The publication also praised the film's technical aspects, particularly its cinematography and sound design, which it described as integral to creating the immersive experience. The humorous sequences featuring Rajpal Yadav as the Chote Pandit were highlighted as standout moments that ensured the film remained lighthearted even during its darker scenes. However, not all the viewers were glowing. लाइक कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है, मतलब जिनको पसंद नहीं आई. ज़ाहिर है कोई भी चीज़ बनती है वो सबको पसंद नहीं आती, तो इसमें कुछ ऐसे भी रिव्यूज़ आए हैं. Some critics felt that Bhool Bhulaiyaa 3 struggled to live up to the legacy of its predecessors, particularly the original 2007 film, which remains a classic in the genre. NDTV, for example, gave the movie a more reserved rating of 2.5 stars, noting that while the film had its moments of brilliance, it lacked the novelty and narrative depth of original. The review pointed out that the reliance on jump scares and the comedic relief, though effective in parts, sometimes undermine the tension and suspense needed to truly immerse the audience in horror aspect of the story. The critic also touched on the pacing, suggesting that certain portions of the film fell down out, affecting its overall impact. तो इस तरह के भी रिव्यूज़ आए हैं, जैसे ये NDTV ने रिव्यू दिया है और 2.5 रेटिंग दी है. Another recurring point of critic among reviewers was the film's heavy reliance on nostalgia. While many fans appreciated the return of Vidya Balan as Manjulika and references to the original film, some critics argued that these elements overshadowed the new storyline and character. They felt that the film leaned too heavily on the success of its predecessors rather than carving out a distinct identity for itself. This statement was echoed by some audience members who expressed disappointment over what they perceived as a lack of originality in the plot. The film's humor, a cornerstone of the franchise, has received mixed reactions. While many viewers enjoyed the comedic interplay between Rooh and Chote Pandit, some critics felt that humor occasionally veered into slapstick territory, diluting the film's more suspenseful moment. This balance between comedy and horror has always been a defining feature of Bhool Bhulaiyaa series, but it remains a delicate act that doesn't always resonate with everyone. Audience feedback has captured in user reviews and social media discussions.
has also been varied. While a significant portion of the audience praised the film's performances and production values, others were vocal about their dissatisfactions. A notable example is singer Goldboy, who described the movie as the worst ever, reflecting the polarized opinion surrounding the film. On the other hand, many fans took to platforms like Twitter and Instagrams to express their excitement over the return of Manjulika and film's engaging twists, indicating that movie struck a chord with its target audience. Okay, despite the mixed critical reception, Bhool Bhulaiyaa 3 has managed to receive impressive box office success, suggesting that the franchise's loyal fan base continues to support its evolution. Some critics have noted that the film's commercial performance highlights its ability to cater to the performances of the mass audience, even if it doesn't always align with the critical expectations. So जो भी पीस ऑफ आर्ट आता है, जो भी मूवी आती है, जो भी ड्रामा आता है, वो कुछ लोगों को पसंद आता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं आता. तो उस पर एक, मगर इसमें जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि 50-50 है, या कुछ लोगों को पसंद आई है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई.
और अगर देखा जाए तो मुझे जो है वो पसंद आई है ये मूवी, बड़ी अच्छी लगी है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इस मूवी ने कितना एक कमाया, बॉक्स ऑफिस में कितना इसने सक्सेस हासिल की, इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये चीज़ें देखते हैं, द सक्सेस इन द बॉक्स ऑफिस. So the box office performance of Bhool Bhulaiyaa 3 has been nothing short of remarkable, solidifying its position as one of the most successful films of 2024. From its opening weekend to its sustained run over several weeks, the film has proven to be a massive commercial hit, drawing audiences across age groups and regions. The blend of horror, comedy, and nostalgia has clearly struck a chord with moviegoers, leading to impressive numbers both domestically and internationally. तो जो फिल्म रिलीज़ हुई थी वो November 1, 2024 को हुई, and perfectly timed to coincide with the festive season of Diwali. तो उस टाइम दिवाली भी थी और दिवाली के सीज़न पे ही ये मूवी रिलीज़ की गई. This strategic release date played a significant role in its box office success, as families flocked to theaters to enjoy the film as a part of their celebration. Bhool Bhulaiyaa 3 opened to packed houses with an impressive collection of 27.5 crore on its first day. By the end of its opening weekend, the film had crossed 100 crore mark, setting the stage for a blockbuster run. तो ये एक अच्छा रेवेन्यू है और दिवाली का भी एज हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है दिवाली पे फैमिलीज़ जो है वो आउटिंग के लिए बाहर जाती हैं, और तो ये भी एक इंटरटेनमेंट का मौका मिल जाता है फैमिलीज़ को, और वो जाते हैं, साथ आउटिंग भी हो जाती है और मूवी भी देख लेते हैं. तो ये एक बढ़िया एज था इस मूवी को एक कामयाब मूवी होने के लिए और अच्छे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. As the weeks progressed, the movie continued to dominate the box office, showing remarkable resilience despite competition from other releases. In its first week alone, Bhool Bhulaiyaa 3 earned over 175 crore in India, benefiting from strong word of mouth and repeat viewings. The film's ability to cater to both urban multiplex audiences and single-screen viewers in smaller towns contributed to its widespread appeal. By the end of its theatrical run in India, the film had amassed a staggering 278.4 crore net and 328.3 crore gross, making it one of the highest grossing Hindi films of the year. तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है. The film's international performance was equally noteworthy. तो जो इसकी इंडिया से बाहर जो फिल्म चली उसमें भी इसने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया और काफ़ी जो है कामयाब रही. Overseas markets, particularly in countries with a large Indian diaspora such as the United States, Canada, United Kingdom and the UAE, embraced the film with enthusiasm. The film grossed 89.18 crore in overseas markets, bringing its total worldwide gross to an impressive 417.5 crore. This global success highlights the franchise universal appeal and the growing reach of Bollywood films on the international stage. Several factors contributed to the film's outstanding box office performance. The star power of Kartik Aaryan, who has become a bankable name in the industry, played a crucial role in driving audiences to theater. His portrayal of Rooh has resonated deeply with fans, making him the face of the franchise modern era.
nostalgic appeal of Vidya Balan reprising her iconic role as Manjulika has uh, has proved to be a major draw, attracting fans of original films. Another significant factors was the film's extensive and innovative marketing campaign. The makers of Bhool Bhulaiyaa 3 leveraged social media, interactive promotions, and teaser reveals to build anticipation among fans. The trailer and songs, especially the chart topping Manjulika return and the catchy Rooh Baba anthem, further fueled excitement for the film's release. Promotional events featuring the cast also ensured maximum visibility, keeping the buzz live in the weeks leading up to the release.